हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस प्रीसेस। तो आज हम अपने घटना चक्र के सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज लोकपाल एंड इम्पोर्टेंट कमीशंस। तो लोकपाल जो है द अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड इन द वर्ल्ड फॉर द रिड्रेसल ऑफ रिसेंट ग्रीवेंस इज द स्कैंडिनेवियन इंस्टीट्यूशन ओम्बड्समैन। तो सबसे पहले जो पब्लिक की जो जनता है उसके शिकायत के निवारण के लिए सबसे पहला जो कार्य किया था वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने किया था। उसको ओम्बड्समैन नाम दिया इन्होंने, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ द ओम्बड्समैन वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन स्वीडन। स्वीडन में सबसे पहले ओम्बड्समैन बनाया गया 1809 में। And in order to meet the long-standing demand to establish a mechanism for dealing with complaints on corruption against certain public functionaries, the Indian democratic system proposed the establishment of Lokpal at the center and Lokayukt at the state level. ठीक है। In its interim report dated 28th October 1966, the chairmanship of Morarji Desai, the first एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966, तो फर्स्ट एआरसी जो रिपोर्ट थी उसकी बात कर रहे हैं ये, रिकमेंडिंग द सेटिंग ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। लेटर इन द ईयर 1967 के हनुमंथैया बिकेम द चेयरमैन। तो पहले जो चेयरमैन थे एआरसी के, आप देख सकते हो लोकायुक्त पहले के हनुमंथैया बिकेम इट्स चेयरमैन। Bills regarding Lokpal were first introduced in 1968 in the parliament in the 4th Lok Sabha. However, on 20th August 1969, the first General Lokpal Bill was passed in the 4th Lok Sabha. In year 1972, Maharashtra became the first state to establish an institution of Lokayukt. The Lokayukt Act of Maharashtra was enacted on 30th November 1971 and it came into effect on 20th October 1972. Although Odisha passed the act in the regard 1970 and came into force in 1983. According to Uttar Pradesh Lokayukt Act 1975, the Lokayukt submits his report to the governor. The governor presented this report in both House of State Legislature. Institution of Lokpal has been established for the first time in India by the Lokpal and Lokayukt Act 2013. The Lokpal consists of chairperson and not more than 8 members. Former Justice Pinaki Chandra Ghosh was appointed India's first Lokpal. In the year 1990, the Bohra Committee was set up to study the problem of criminalization of politicians and bureaucrats in India. So it's very important. Raj Mannar Committee recommended the abolition of Indian Administrative Services and Indian Police Services. In the year 1993, then the President exercised his power under Article 223 and promulgated the Protection of Human Rights Ordinance. तो आप देख सकते हो कि जो लोकपाल है, पहली बार फर्स्ट एआरसी जो थी 1966 में, उसके रिकमेंडेशन के बाद से लोकपाल एंड लोकायुक्त की स्थापना की गई और 1967 में के हनुमंथैया इसके पहले चेयरमैन बने। तो लोकपाल से संबंधित जो पहला बिल था वो 1968 में फोर्थ जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुआ था उसके थ्रू लोकपाल पे पहला बिल आया और 20 अगस्त 1969 को पहला लोकपाल बिल पास हुआ। और उसके बाद 1972 में महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट बना जो लोकायुक्त की इस्टेब्लिशमेंट की बात करी, और लोकायुक्त एक्ट ऑफ महाराष्ट्र 30 नवंबर 1971 में आया। और उसके बाद आप देख सकते हो कि 25 अक्टूबर उड़ीसा ने भी उसके बाद उड़ीसा ने पास किया 1970 में बिल, और फिर उसके बाद यूपी में 1975 में बिल पास हुआ। फिर लोकपाल बिल आप देख सकते हो, याद होगा आपको कि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी मोदी सरकार से पहले, तो लोकपाल पे ही मतलब एक प्रोटेस्ट हुआ था जो अन्ना हजारे, और उसमें भी लोकपाल की बात करी गई थी। तो 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल आया था और इसके जो चेयरमैन पहली बार थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था। इंडिया पहले लोकपाल थे ये। और वोहरा कमेटी जो है वो सेटअप की गई, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स इन इंडिया। तो आप देख सकते हो वोहरा कमेटी जो थी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट। राजमन्नार कमेटी जो थी वो अबॉलिशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज की बात करती है कि। और फिर 1983 में प्रेसिडेंट एक्सरसाइज पावर अंडर आर्टिकल 123 to promulgate the protection of human right ordinance। तो 123 का ऑर्डिनेंस के प्रोमलगेशन से रिलेटेड है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 28 सितंबर 1993। तो 1993 28 सितंबर को ह्यूमन राइट एक्ट आया। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो थी वो एक स्टेचुरी बॉडी बनाई गई, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 October 1993। Its chairman and members are appointed by the president on the recommendation of 6 member committee consisting of prime minister as its head, the speaker of Lok Sabha,
डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द होम मिनिस्टर। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, अपॉइंट करता है कौन, तो प्रेसिडेंट करता है इसके चेयरमैन का अपॉइंटमेंट, और फिर 6 अदर कमेटी मेंबर्स होंगे, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी इनके हेड होते हैं, स्पीकर लोकसभा होंगे, फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द होम मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ कमीशन इज मेनली रिकमेंडेटरी इन नेचर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019 अमेंडेड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993, और पहले जो मेजर अमेंडमेंट्स थे क्या थे, द एक्ट प्रोवाइड दैट द पर्सन हु हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी, ठीक है। द एक्ट फॉर 3 पर्सन of which at least one will be a woman having knowledge of practical experience in matters related to human rights to be appointed as a member of NHRC, ठीक है। Act reduces the term of office of the chairman and members of NHRC and says to 3 years till the age of 70 years, whichever is earlier. The chairperson and member of State Finance Commission are appointed by the government. तो State Finance Commission को chairperson को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो था CIC, Official Gazette Notification under the provision of Right to Information Act 2005. According to Right to Information Act 2000, term of the CIC Commissioner 5 year or 65 year of age. According to Right to Information Amendment Act, the tenure of Chief Information Commission and other information commissioner will be determined by the central government, and in addition to the central and state level, Chief Information Commissioner and other information commissioner will receive the same salary allowance and other facilities central government determines. In year 1917, under the chairmanship of Bindeshwari Prasad Mandal, the Mandal Commission was established, and the main task of this commission was to identify the recommend steps for the advancement of social and educationally backward classes of India. तो आर्टिकल 305 में क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट, ठीक है। तो यूपीएससी के मतलब रिलेटेड आर्टिकल 315 है, देख सकते हो। यूनियन पब्लिक कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेयर एज द चेयरपर्सन, देखो चेयरमैन और अदर मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वेयर एज चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 323, द यूपीएससी प्रेजेंट एनुअली द प्रेसिडेंट a report on his performance, whereas SPSC present annually the governor report on their performance. According to Article 322, the expenses of the Union or State Public Service Commission shall be charged on the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of State in case of SPSC. तो आप क्वेश्चंस देखना। अकॉर्डिंग टू लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, द लोकपाल वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी विद द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन एंड कंसिस्ट अमंग विच फॉलोइंग। तो इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज वगैरह नहीं होते हैं शायद, ठीक है। तो इसमें जो देख सकते हो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा नहीं होते, दिस इज नॉट इन द लिस्ट। तो आंसर इज 1, 3 and 4, ठीक है। तो अब प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम बाय वन एमिनेंट जूरिस्ट, रिकमेंडेड बाय द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स रेफर टू इन द क्लॉज। तो ठीक है, तो इसमें राज्यसभा से रिलेटेड कोई नहीं होगा, राज्यसभा से कोई नहीं है। तो सिलेक्शन कमिटी ऑफ लोकपाल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, इट शैल अपॉइंट टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट बोथ विद इन द आउटसाइड इंडिया। तो केवल ये होगा, ये नहीं होगा, राज्यसभा से रिलेटेड कोई चीज़ इसमें नहीं होती है। Power of Lokpal applies to public servant of India but not to the Indian public servant posted outside India. The chairperson of a member shall not be a member of parliament or a member of the legislature of any state or union territory, and only the chief justice of India but the incumbent has to be its chairperson. The chairperson or a member shall not be a person of less than 45 years of age on the date of his office as the chairperson or member as the case may be, and Lokpal cannot inquire into the allegation of corruption against the sitting Prime Minister of India. तो इसमें जो है आप देख सकते हो कि जो स्टेटमेंट करेक्ट है तो सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये चेयरपर्सन ऑफ मेंबर शैल नॉट बी ए पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ रिज्यूमिंग ऑफिस एज चेयरपर्सन और मेंबर, 45 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 45 ईयर्स की एज कम से कम चाहिए चाहिए। आप देख सकते हो लोकपाल ज्यूरी अप्लाइज टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट बोथ विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट।
The Lokpal and Lokayukt Act 2000 does not say that only the Chief Justice of India can be chairperson apart from CGI. ठीक है, तो member of parliament or a member of legislature or any state shall not be a member. ठीक है, therefore statement 2 is incorrect. Minimum age for chairperson of a member is fixed 45 years and this requirement applies to the date the person assumes office as a chairperson member. The prime minister is included in the jurisdiction of Lokpal. Who is the first पिनाकी चंद्र घोष जो थे पहले लोग थे, आप देख सकते हो. Who among the following has been appointed as the chairperson of Lokpal India? Pinaki Chandra Ghosh was appointed as the chairperson of Lokpal in India in 2024 में. अजय मानिक राव खानविलकर अभी हैं, पहले तो वो थे, सॉरी, पिनाकी चंद्र घोष तो पहले थे. 2024 की बात कर रहे हैं तो एम खानविलकर. Establishment Lokpal and Lokayukt in India was recommended by Administrative Reform Commission ARC की रिपोर्ट से हुई थी. Appointment Lokayukt at the state level was first recommended by Administrative Reform Commission 1966. Indian model of ombudsman is Lokpal. Who among the following committee has recommended the creation of local body ombudsman? First, Administrative Reform Commission. Administrative Reform Commission 1967, which was the first time recommended for the setting up of Lokpal and Lokayukt, was headed by Morarji Desai. The first Lokpal bill was presented in the Parliament in 1968. Statement about the Lokpal Bill 2011 is correct. Was introduced in the Lok Sabha on 4 August 2011. Was introduced by Sri P. Chidambaram, Home Minister. Has been referred to the Standing Committee. Has been termed as a civil society member as a week. तो इसमें ये भी सही है, 2011 में एंट्री की गई थी इसकी और पी चिदम्बरम इसको नहीं लाए थे. ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट. सो आंसर इज 1, 3, 4 एंड इसमें सिविल सोसाइटी मेंबर की बात करी गई थी. सो आंसर इज 1, 3 एंड 4. आप देख सकते हो लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 4 अगस्त 2011 इन लोकसभा बाय द देन पार्लियामेंट्री अफेयर्स वी नारायण स्वामी and after that it was sent to standing committee of parliament on weak public grievance law and justice. It has been termed weak by civil society members and Lokpal. It is noteworthy that the bill relating to Lokpal or Lokayukt has taken form of law or act from January 1, 2014. Civil society representative in India panel for the drafting Lokpal will include अन्ना हजारे थे इसमें, संतोष हेगड़े और शांति भूषण. ये 3 लोग थे इसमें लोकपाल वाले बिल में, क्योंकि अन्ना हजारे का ही प्रोटेस्ट था उस टाइम पे. आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, संतोष हेगड़े और प्रशांत भूषण, ये सारे 5 मेंबर थे लोकपाल सिविल सोसाइटी को ड्राफ्टिंग लोकपाल बिल वाले में. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड? महाराष्ट्र. द फर्स्ट लोकायुक्त वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? दैट इज महाराष्ट्र. Which one of the following state first established the institution of Lokayukt? That is Maharashtra. Lokayukt Uttar Pradesh submits its report to governor. What is tenure of Uttar Pradesh Lokayukt? That is 5 years. The first Indian state to pass the Lokayukt bill in 2011 is Uttarakhand. Which of the following are the state where the chief minister come in the ambit of Lokayukt Act? ये तो आंसर इसका दिया नहीं, वैसे सी करेक्ट होना चाहिए, गुजरात और महाराष्ट्र में. Under Section 7 of the Rajasthan Lokayukt and Deputy Lokayukt Act 1973, the Lokayukt is empowered to investigate allegations against minister and public servant in certain cases. So, sexual harassment of women, caste discrimination and violence against children. A committee constituted in 2014 under the chairman of Narpat Mal Lodha is related to which of the following subject? That is Lokayukt. The definition of term minority is not given in the Constitution of India. Minority Commission is not a constitutional body. So both A and B are true, but R is not the correct explanation. Consider the following statement about the minorities in India. The government of India has notified 5 communities, namely Muslim, Sikh, Christians, Buddhist and Zoroastrians as minorities. The National Commission for Minority was given statutory status in 1993. The smallest religious minority in India are the Zoroastrians. Constitution of India recognizes the protest and protects religious and linguistic minority. तो linguistic minority जो है वो constitution recognize करता है.
So government of India has notified 5 communities, namely Muslim, Sikh, Christian, Buddhist and Zoroastrians as minority. ठीक है, सही बात है. नेशनल कमीशन वॉज फॉर माइनॉरिटी वॉज गिवन स्टेचुरी स्टेटस 1993. हाँ, ये भी सही है. स्मॉलेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया आर जोरो ऑस्ट्रियंस. नहीं, ये नहीं है. ओके, द आप देख सकते हो. As the exist other small minorities, they are not notified recognized as a minority. ठीक है, Constitution of India recognize the protect the religious and Zoroastrians are not smallest religious minority. ठीक है. Consider the following statement with the reference to special officer of linguistic minority in the Constitution. There is a provision for the post of a special officer for linguistic minority for every state. A new Article 350B was added for this by the 9th Constitutional Amendment Act. ये दोनों गलत है. The function of National Commission for Women are specified in Section 10 of the National Commission for Women Act 1990. Who among the following are appointed as the chairman of Secondary Education Commission by Government of India 1952? That is Lakshman Swamy Mudaliar. Which of the following is not in existence now? That is Planning Commission अब नहीं है. इसकी जगह पर नीति आयोग कर दिया गया है. वोहरा कमेटी was formed to study nexus of politicians and criminals. Name the committee which has investigated and submitted the report on the nexus of politicians and commission is Vohra committee. The recommendation to end Indian administrative services and Indian police services is Raj Mannar committee. Other than the fundamental rights, which of the following part of the Constitution of India reflect the principle and provision for universal declaration of human rights 1948? तो बिल्कुल प्रियम्बल भी है, डीपीएस भी है, फंडामेंटल राइट तीनों में होगा. तो आंसर इज डी. Who was the Universal Declaration of Human Rights adopted the United Nations? तो कब किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को यूएनएचआरसी को अडॉप्ट किया गया. हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो 30 आर्टिकल हैं टोटल. 10 दिसंबर को क्या है? ह्यूमन राइट डे. The concept of human right clearly emphasizes on dignity of man as a human being. Which of the following is not considered to be one of the human rights listed by the United Nations? That is right to privacy. Universal Declaration of Human Rights adopted the UN General Assembly does not include the which of the following. तो ये क्या है? Right to universal basic income. Which of the following is considered to be the second generation of human right? तो इसका आंसर वैसे तो right to work होना चाहिए, but इन्होंने आंसर क्लियर नहीं दिया है. Eradication of all types of social discrimination comes under which generation of human right? So that is second generation. फर्स्ट जनरेशन में क्या है? लिबर्टी एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ. ठीक है, दे आर फंडामेंटल सिविल एंड पॉलिटिकल इन नेचर. थर्ड जनरेशन क्या है? ह्यूमन राइट रेफर्स टू कम्युनिटी एंड कलेक्टिव राइट्स. तो आप देख सकते हो पहला जनरेशन में क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट डील्स विद लिबर्टी और पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ की बात करते हैं. तो सेकंड जनरेशन में क्या है? इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन. और थर्ड में क्या है? थर्ड में है ह्यूमन राइट रेफर्स टू कम्युनिटी एंड कलेक्टिव राइट्स. ठीक है. Right to the city is an agreed human right and UN Habitat monitor the commitment made by each country in this regard. Right to city gives every occupant of the city the right to reclaim public space and public expense in the city. Right to the city means the state cannot deny any public service or facility to the unauthorized colonies in the cities. तो पहला वाला जो है right to city is an agreed human right and UN Habitat monitor the commitment made by each country in this regard. No, this is not an agreed human right. Okay, the emerging agenda is strongly centered the Habitat 3 human habitat policy theme of right to the city and cities for all. The sociologist Henry Lefebvre proposed the right to the city in 1968. Henry David de Harvey developed the concept of new millennium as a means to reshape the organization by enhancing the extending access to human right, but it is not an agreed agenda. ठीक है, so right to the city is defined as the right of all inhabitants present and future to occupy, use and produce just, inclusive and sustainable cities, defined as the common good essentials to the quality of life. The right to the city further implies the responsible on government and people to reclaim, defend, promote this right. The city has a common good. The right to the city does not mean the guarantee of any public service or facility to unauthorized colonies in a city. So right to city means
especially just resource distribution plus social, economic and cultural diversity. Under which article of Constitution the Protection of Human Rights Ordinance was issued by the President in 1903? That is Article 123. When did Protection of Human Rights Act come into the force in India in 1993? So about the Protection of Human Rights, so it came into force on 30th September. No, it's on 28th September. 28 September को आया था. What was the objective of protection of human rights 1993? That is better protection of human right, constitute human right protection in the state. Which of the following right is not under the purview of the National Human Rights Commission? In which section of the Human Rights Protection Act 1993 the public servant defined in section 2 clause M? In the definition of armed forces under the Protection of Human Rights Act, which of the following is not included in armed forces of the Act? Who is not member of the committee for the appointment of chairperson and members of the National Human Rights Commission, that is chairman of Council of States? Who is not a member of a committee constituted by recommendations of appointment of chairperson and other members of National Human Rights Commission, that is chairman of the Council of States? Who is not the ex officio member of National Human Rights Commission, that is chairman of the Law Commission of India? Which of the following statement is not correct in relation to Protection of Human Rights Act? The tenure of chairman of National Human Rights Commission is 3 years. The term of office of member of National Human Rights Commission from the state on which he or she enters upon his office is 70 years, maybe 3 years or 70 years. So it's 3 year or 70 years. So none of the options are given, so just leave the question. Consider the following statement regarding the National Human Rights Commission of India. Its chairman must be retired Chief Justice. It has permission to initiate a state human rights commission. Its power are only recommended in nature. It mandatory to appoint a woman as a member of the commission. So, Human Rights Commission established in 1983. Chairman or member of commission appointed by President. Protection of Human Rights Amendment Act to entitle the Chief Justice of the Supreme Court as well as other judges of Supreme Court to be appointed as the chairman of National Human Rights Commission. Apart from this, the number of members of civil society for chairman has been increased from 2 to 3, in which least one member must be a woman. Its power is recommendatory in nature. The State Human Rights Commission are constituted by the state and they are not part of National Human Rights Commission. The National Human Rights Commission is to be headed by a person who has been a former Chief Justice of India. ऐसा कुछ नहीं होता है. Chairperson of NHRC hold office for a term of 5 years or 3 years. No, it's a 3 year or 70 year. So ये भी गलत है. तो ये दोनों गलत हुए. According to National Human Rights Commission Act 1993, who among the following can be its chairman? So answer is not given. Among the following, who was the first president of Human Rights Commission of India? That is रंगनाथ मिश्रा जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे ह्यूमन राइट कमीशन के. ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को ये इस्टेब्लिश हुआ था और रंगनाथ मिश्रा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एनएचआरसी एंड इट्स टेन्योर इन द ऑफिस वाज 12 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर 1996 तक था. हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? तो अभी कौन है? एचएल दत्तू. Who among the following eligible to be appointed by the chairperson of Rajasthan State Human Commission? तो Chief Justice of High Court. Chairperson or member of Human Rights Commission are appointed by Governor. ये गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट में. Who presided over the committee constituted for the appointment of members of the State Human Rights Commission? तो चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रिसाइड करता है. And who is not included in the committee to recommend name for the appointment of chairperson and members of the State Human Rights Commission? That is Governor. Who is included in the committee to recommend name for the appointment of chairperson and members of State Human Rights Commission? The Speaker of Legislative Assembly and Leader of Opposition. Sitting judge of High Court or a sitting district judge can be appointed as a member of State Human Rights Commission after consultation with the Chief Justice of High Court of the concerned district. Next is, in the event of occurrence of any vacancy in the office of the chairperson of the state, who can authorize one of the members to act as a chairperson? So that is Governor. Analyze the statement with reference to National Human Rights Commission. National Human Rights Commission encourages
the organization working in the field of human right. The work of commission is also to be conduct research in the field of human right. तो both ये दोनों सही है स्टेटमेंट, दोनों इनकरेज करता है ऑर्गेनाइजेशन करने का और वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स. वर्क ऑफ कमीशन इज टू कंडक्ट द रिसर्च इन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट. बिल्कुल दोनों सही है. बोथ आर पॉजिटिव स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन इंक्वायर सुगो मोटो वॉल्यूशन ऑफ विजिट एनी जेल और review the protection of human right to punish for the violation of human right. That is ये नहीं करता है, पनिश नहीं करता है, बाकी सब कुछ कर सकता है. Human the state commission submits a annual report to the state government. Every member of commission, state commission, and every officer appointed by the authorized by the commission or state commission to exercise function under the Protection of Human Rights Act is to be deemed by public as a public servant. Okay. An advocate may be specified by the state government for the purpose of conducting a case in human rights court as a special public service prosecutor who has been in practice for not less than 7 years. In relation to offences described under Section 175, Section 178, Section 179, Section 180 or Section 280, 228 of Indian Penal Code, Human Rights Commission is to be deemed as civil court. While dealing with complaints of violation of human rights by the member of armed forces, the Commission either on its own motion or on receipt of petition will seek a report from the central government. Okay. Which one of the following is not a constitutional body? That is Human Rights Commission. Which one of the following has a status different from the other three? That is Human Rights Commission. Inter-State Council कब बना है, एनडीसी कब बना है, सेंट्रल विजिलेंस कब बना है, नेशनल ह्यूमन. तो देखो ये तो सही है, ठीक. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी सही है, इंटर स्टेट काउंसिल भी सही है. ये गलत है. एनडीसी और फॉर्म्ड इन 1952 में बना था, ठीक है. आंसर इज बी. Who was the chairman of the first law commission in India? तो कौन थे पहले कौन थे? MC सीतलवाद was the first law commission जब हुआ था तो उसके चेयरमैन थे ये. Consider the following statement regarding appointment of National Commission for Revising the Constitution. So that is, report will be recommendatory in nature and it's presided over by Chief Justice M.N. Venkatachalaiah. Answer is B. Chairman of the Constitutional Review of Commission set up in February 2000 is M.N. Venkatachalaiah, who is chairman of Central Pollution Control Board. तो इसका तो आंसर ही नहीं दिया, बट इसका आंसर होगा चेयरमैन who has special knowledge of practicable experience in respect of matters relating to environmental protection. तो अभी चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. श्री अमनदीप गर्ग जो है इज एक्टिंग चेयरमैन ऑफ दिस बोर्ड. तो अभी श्री अमनदीप गर्ग जो है वो एक्टिंग चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, ठीक है. The question considered by the Swan Singh committee was related to priority to directive principle of state policy in comparison to fundamental rights. Central Vigilance Commission was set up on the recommendation of Santhanam Committee. Establishment of Central Vigilance Commission to advise and guide the central agency in the field of vigilance is based on the recommendation of K. Santhanam Committee. Central Vigilance Committee, Santhanam Committee. Which of the Indian constitutional article describe the Central Vigilance Commission is? ऐसा कोई आर्टिकल बना ही नहीं है. None of the above. The following pair is not correctly matched. CBI 1963, CVC 1964, Prevention of Corruption Act 1985, Enforcement Direct ED. तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये दोनों गलत हैं. ओके, तो आंसर इसमें से दोनों में कोई होगा, क्योंकि जो ईडी है वो ईडी जो है वो 1956 में बनाई गई थी, 56 में. और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है ये 1988 में आया था. बाकी ये दोनों सही हैं, सीबीसी और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. तो सीबीआई जो है वो 1963 में आई थी, सीबीसी 1964. मंडल कमीशन whose proposal created massive dispute was set up by विश्वनाथ प्रताप सिंह, मोरारजी देसाई ने बनाई थी इसको. रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन was submitted in 1980.
The causes of atrocity in scheduled caste and scheduled tribe, according to a report of National Commission for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe in the year 1990, do not include the religious causes. ठीक है, in which article institution constitution in is there the provision of public service commission. तो article 315 जो होता है वो public service commission से related है. Which of the following is correct about Union Public Service Commission of India? That is, it has nothing to do with the state public commission. The following is correct. Union Public Commission is a constitutional organization. Okay. UPSC derived the function from which of the following sources? The Constitution, parliamentary laws, executive rules and orders, conventions. तो सारे ही होते हैं इसमें. UPSC submits a report to President. A joint state public service commission may be applicable for two or more states. Prospective state agreed in this regard, and Parliament appoint joint public service commission by law. Okay. Joint public service commission for two or more state by Parliament. Chairman of Joint Public Commission two or more states appointed by President of India. Chairperson of the State Public Service Commission appointed by Governor of the state. Appoint the member of State Public Service Commission is Governor. Chairperson and member of State Public Service Commission was appointed by Governor. Which article of the Constitution has provided provision for removal of members of Public Service Commission? That is Article 317. A member of State Public Service Commission may be removed by the President and after the inquiry conducted by Supreme Court. तो पब्लिक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, दोनों ही सही है स्टेटमेंट. विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द मैंडेटरी सेशन एप्लीकेशन डिसिप्लिनरी. तो इसे आप आंसर देख सकते हो, दैट इज आर्टिकल 320. इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर डज नॉट प्ले एनी रोल. दैट इज चेयरमैन ऑफ पब्लिक कमीशन जो है इसका पार्लियामेंट में कोई रोल नहीं आता है, तो 3 ओनली, बाकी सबका रोल है. Chairman of Public Service Commission can be removed by office by President. Which of the following matter the State Public Service Commission is not consulted on making transfer of civil servants? UPSC can be entrusted with the function of State Public Service Commission with the approval of President of India. Union Public Service may be agreed to serve the needs of the state if on request of the governor with approval of the President. Function of State Public Service Commission of Uttar Pradesh can be extended by the UP State Legislature. Which of the following is article of Constitution of India linked the expenses of Public Service Commission? तो expenses के लिए article 322 खर्चे. Expenses of Public Service Commission of Uttar Pradesh are charged upon the consolidated fund of state. Rajasthan Public Service Commission presents an annual report to the Governor of Rajasthan. Which act established the Public Service Commission in the India for the first time? That is Government of India Act 1919. Under which provision Madhya Pradesh Service Commission has been constituted? Section 118 of the State Organization Act 1956. Madhya Pradesh shall consist of maximum 5 members. First woman chairman of Union UPSC is Rose Bethel. In the context of India, which of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy, that is an agency for the implementation of public policy? Which of the following article of Indian Constitution mention the doctrine of pleasure? Doctrine of pleasure is Article 310. Very important, doctrine of pleasure. आर्टिकल 310 जो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात करता है. इसमें कहता है कि एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विस और ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन or of an all India service or hold any post connected with defense or any civil post under the union holds office during the pleasure of president, and every person who is a member of civil service of the state body in civil service will hold office during the pleasure of the governor of the state. तो सही है. कोई भी पोस्ट जो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट, अगर केंद्र की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति पर्सन है, अगर वो डिफेंस सर्विसेज में रहा हो या सिविल सर्विसेज में रहा हो, ठीक है, तो वो कोई भी पोस्ट कनेक्ट अगर करता है सिविल पोस्ट में, तो रिकमेंडेशन होगा प्रेसिडेंट का उसमें या गवर्नर का राज्य में, तब जाकर के उसे सिविल से संबंधित कोई पोस्ट मिल पाएगा. ठीक है. The Union Public Service Commission constituted a committee in 2000 to review the civil services examination under the chairmanship of Professor Sukhdev Thorat. ठीक है. In which year PC Hota Committee Civil Services Reforms was constituted in 2004?
On which of the following date the सिविल सर्विसेज डे इज टेकन इन जून 21 को, सॉरी अप्रैल 21 को स्टेट सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, सॉरी सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है किसको, 21 अप्रैल को, ठीक है। एंड टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस में आप क्वेश्चंस देखते हैं। Each article of Indian Constitution deals with the special provision with respect to different state, that is आर्टिकल 371। 370B में क्या है, आसाम से रिलेटेड है ये। आर्टिकल 371 जो है वो किससे रिलेटेड है, महाराष्ट्र एंड गुजरात से रिलेटेड है। आर्टिकल 371J जो है वो हैदराबाद और कर्नाटका से रिलेटेड है। In India there is only one constitution for the center as well as for its state, that is nothing. Article 370, which of the following is not a generally accepted parameter for granting special status to act in India is sizable of SC/ST population. Providing special status to the state of Jammu and Kashmir under the Indian Constitution means, Article 370 of Indian Constitution is a temporary and transitional provision. Article 370 of Indian Constitution related to the Jammu and Kashmir. Article Constitution of that apply on the response to the state of Jammu Kashmir Act, Article 370. According to Constitution, स्पेशल स्टेटस जो है वो आर्टिकल 370 से रिलेटेड है। ये भी आंसर गलत है। Arrange the following event in the chronological order and select the answer for the codes given below. तो महाराजा हरि सिंह signed the instrument of accession. Constitution of India was enforced. Accession of India ratified the sovereign constituent assembly of Jammu and Kashmir. New constitution of the state of Jammu and Kashmir came into force. तो इसमें 1, 2, 3 and 4 जो स्टेटमेंट है सारे सही हैं। एंड which of the following state was never granted special category status by central government, that is बिहार को अभी तक स्पेशल कैटेगरी नहीं दी गई है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग माय घटना चेकर सीरीज वीडियो। और आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे इलेक्शन कमीशन और बाकी जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो जल्द ही जब हमने पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर लेना है इस घटना चक्र की सीरीज, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे, दैट इज मे बी ज्योग्राफी और हिस्ट्री। यू कैन रिकमेंड, आप कुछ आपका जो भी मतलब फीडबैक हो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगर ज्योग्राफी पढ़ना हो तो ज्योग्राफी में करवाऊंगा, या फिर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी इन्वायरमेंट, कोई भी सब्जेक्ट हो आप कह सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे, कीप स्टडी।